Hello everyone, good evening, and I welcome you to the channel Let's Trade. As part of our morning ritual, I am going to discuss about Nifty 50. So before starting it, let's first discuss what are the reasons behind the today's market fall. So I have been through many news channels. So the main three reasons I point out. So first was the corona cases. India reported 1 lakh corona cases yesterday. So it is a quite worst news, I must say, not bad news. It's a worst news for the coming days. Second, FI FIIs they again today booked profit. Obviously, they were also quite worried after listening the news in the Indian market that the cases has risen to 1 lakh per day. And so these were the main two reasons. And let's discuss today's market, what happened and what can happen tomorrow. So in the previous video I showed you this range. So the market was ranging between these two level, and I told you these two lines you need to watch carefully. If these lines get broken, market can fall to any value. So the market tried to stagnate itself to might be it tried to bounce back. It was there for some time, but it failed, and you can see the result where till which point it went. So this was very horrible. Those who are in the call option, they might have faced a huge loss today. Considering today's scenario, let's discuss what can happen tomorrow. So the market closes here today. So there are less chances that market will outperform tomorrow. This is what I believe considering the corona cases and fear in the market. So let's suppose if so I'm directly giving the trade what can happen and you can take your decision accordingly. So considering market open to be flat, so market either can go upward or in the downward direction. So if it goes in upward direction, keep this as your first target. Don't take so much risk. You don't need even to trade tomorrow. If you have losing money today, so no need in to trade tomorrow. Okay, so this can be a good target. Why I'm telling you, you can see the gap here. If you go in the past, so you can see market has hit here thrice, and today also I can see a bit gap here. So I feel this can be a resistance as well. Okay, so this can be your target. And if market go downward, if it opens flat and it goes in the downward direction, keep this as your support or target. Okay, this one. You can consider this also for if you don't want to take much risk, but I will tell you to keep this as your target because market is falling like anything, so you can keep this as your target. And if suppose market opens here in downward direction or even below this direction, this target also, since market once reached till this level also today, so it might reach tomorrow also. So let's consider this as our target if it opens below. And if it opens little bit above than this closing today, so it can reach till here and come back also. And if it opens little bit more than this target, okay, so wait for some time, let it see. If it retrace, then it goes in the upward direction. It might be a reason, might be it come downward for a while and it then it can go upward. So you must consider this as your target in the upward direction, and don't take much risk. So now I will be explaining a bit in Hindi also because there are some traders who don't understand English and there are some traders who don't understand Hindi. So I need to uh, give it in both languages. So okay, now let me give it in Hindi. सो गाइस कल क्या हो सकता है, मैंने पहले आपको बताया था कि मार्केट जो है रेंज बाउंडेड था इस एरिया में, ठीक है। और मैंने बोला था इस इन दो को आप बहुत ध्यान से देखना क्योंकि कुछ भी हो सकता है।
इन दो के बाद अगर मार्केट ने इनको क्रॉस किया, आप देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो, ठीक है। मार्केट यहाँ पे स्टेगनेंट रहा, हो सकता है वो ट्राई कर रहा था कि मैं किसी तरह ऊपर चला जाऊं, बट हो ही नहीं रहा था। वो जैसे उसने इसको ब्रेक किया इस ट्रेंड लाइन को, धम से नीचे गिरा है, मतलब सांस भी नहीं ले पाया, वो सीधा नीचे ही जाया जा रहा था। मैं देख रहा था क्या हो रहा है यहाँ पे, एकदम बुरी हालत थी, मैं अपना काम भी कर रहा था, देख रहा था यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक किया, आए हमारे बुल्स लोग, बट ठीक है, फिर भी काफी नीचे बंद हुआ मार्केट। अब हम डिस्कस करते हैं कल क्या हो सकता है, ठीक है। तो कल अगर मार्केट मान लो यहाँ से फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, तो और वो ऊपर जाने की ट्राई करता है, तो भाई इसको अपना एक टारगेट लेके चलो, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना हमें, ठीक है। इसको अपना एक टारगेट लेके चलो, दे हो सकता है इस पर टकरा के वापस नीचे आ जाए। इनकेस थोड़ा नीचे गिरता है, आप इधर भी एक टारगेट रख सकते हो, और क्योंकि मार्केट की हालत खराब है तो हो सकता है और नीचे गिर जाए, तो वो हो सकता है यहाँ तक आ जाए, तो ये अपना टारगेट रखो नीचे। और इनकेस मार्केट नीचे खुलता है, यहाँ खुलता है ऐसे नीचे, तो आप इसको अपना टारगेट रखो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो आज मार्केट यहाँ तक तो आया ही है, और हो सकता है यहाँ तक तो पहुंच ही जाए कल बिना किसी रुकावट के। कुछ बीच में दिख ही नहीं रहा मेरे को अच्छा सा कि जहाँ पे ये कुछ लगे कि हाँ भाई यहाँ पे रुक सकता है, तो यहाँ तक पहुंचना इजी है मार्केट के लिए अगर इनकेस नीचे खुलता है। और अगर ऊपर खुलता है मान लो यहाँ पे कहीं, तो भाई आप वेट करो, क्या बताओ यहाँ पे आके वापस जाए, मतलब डायरेक्टली ऐसे जाना काफी मुश्किल लग रहा है, एकदम ऐसी जंप देना, कंसीडरिंग कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। इन केस अगर कोरोना नहीं होता तो हम मान सकते थे कि ये ऐसे जा सकता है, बट वो काफी नेगेटिविटी फैला रहा है मार्केट में, तो हो सकता है ये ऐसे सीधा जाना थोड़ा मुश्किल हो इसके लिए। और मार्केट सेंटिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, तो मैं ऐसे भी नहीं कह रहा कि नहीं जाएगा, हो भी सकता है, हम केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम बस वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को, जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये एकदम से ऊपर भागता है तो आपको देखना है आपको क्या करना है, ठीक है। और अगर ये अब मान लो यहाँ पे खुलता है और थोड़ा नीचे आता है, तो देखना है यहाँ पे, थोड़ा देखना कि यहाँ पे कितना टकरा रहा है या सीधा ही नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। चलो गाइस, बाकी हैप्पी ट्रेडिंग, और अपना ध्यान रखना। और गाइस अपना चैनल थोड़ा ग्रो करने में हेल्प करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि जल्दी से हमारा चैनल भी ग्रो। थैंक यू। और एक अनाउंसमेंट है, हम बहुत ही जल्दी एक टेलीग्राम चैनल खोलने वाले हैं जहाँ पे हम पर पर्सन 1000 रुपीज़ चार्ज करने वाले हैं, और हम वहाँ इंटरडे ट्रेडिंग भी देंगे। तो बाकी आपके विश है, अगर आप आना चाहो तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम यूट्यूब पे वीडियो डालते रहेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग और निफ्टी 50। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।